हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में सेल इंजरी के बारे में, जिसके बारे में हम डिस्कस किए थे कौन कौन से पाथवे से सेल इंजरी कॉज होते हैं और कैसे कैसे वो पाथवे को फॉलो करते हैं। जैसे हमने बात की थी रिवर्सेबल, इरिवर्सेबल, लाइक हमने और भी बात की कि मैकेनिज्म क्या होगा सेल इंजरी का, और फिर हमने बात की थी कि उसके कॉजेज़ क्या जो होंगे, जैसे एक्वायर्ड कॉजेज़, हाइपोक्सिया, इस्कीमिया, माइक्रोबियल एजेंट्स एंड इम्यूनोलॉजिकल एजेंट, फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स, जेनेटिक कॉज में जैसे हमारा क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। तो डिफरेंट टाइप के हमने कॉजेज़ की बात की थी क्या होती है और बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है सेल इंजरी का। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम अब जो सेल इंजरी है ये कौन कौन से पाथवे को फॉलो करके सेल का डेथ होता है। जैसे हमने बात किया था कि एक होता है रिवर्सेबल, एक होता है इरिवर्सेबल। तो रिवर्सेबल में तो वो नॉर्मल में खुद को अडेप्ट करके वो नॉर्मल सेल में आ तो जाता है, लेकिन इरिवर्सेबल में क्या होता है, सेल की कम्प्लीटली डेथ होती है और वो दो पाथवे को फॉलो करती है, दैट इज़ नेक्रोसिस एंड द एपोप्टोसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमने इस सारे टॉपिक्स का जो सेल इंजरी है फर्स्ट यूनिट हमारा पैथोफिजियोलॉजी का, इसका नोट्स हमने बना रखा है ऑलरेडी। हमने सारे टॉपिक्स को जो हम क्लियर करेंगे उसकी वीडियो कंप्लीट करेंगे, और इसकी सारी जो समरी है, इसका जो पूरा पीडीएफ नोट्स है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उसके लिंक को आप वहाँ से आके क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पाथवे से सेल इंजरी होता है और सेल की डेथ किस तरीके से होती है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में, रिवर्सिबल के बारे में हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। हमने बात करी थी इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में, दैट इज इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में हमने डिस्कस किया था। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में हमने दो चीज़ के बारे में देखा था, डैट इज़ नेक्रोसिस एंड एपोटोसिस या एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। हम कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम नेक्रोसिस के बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे, और ये जो पैथोफिजियोलॉजी है ज़्यादा फोकस करता है आपका नेक्रोसिस के बारे में। एपोप्टोसिस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन या मतलब बहुत ज़्यादा हम इसके बारे में कवर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एक ओवरव्यू लेंगे कि एपोप्टोसिस किस मैकेनिज्म से होता है और किस तरीके से होता है। बट नेक्रोसिस के बारे में हम सारी चीज़ें जानेंगे, इसमें चेंजेस क्या आएंगे, क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे, एंड व्हाट विल बी द लाइक द टाइप्स एंड व्हाट विल बी द चेंजेस इन द एंजाइमेटिक डाइजेशन इन द नेक्रोसिस। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा वास्ट तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। हम बात करते हैं एपोप्टोसिस क्या होता है। एपोप्टोसिस जो होता है हमारा प्रोग्राम सेल डेथ। इट इज़ प्रोग्राम सेल डेथ। इट इज़ प्रोग्राम सेल डेथ। इट्स लाइक दैट शेडिंग ऑफ द लीव्स। जैसे हम बात करते हैं कि कोई भी ट्रीज होती है उसकी क्या होती है, लीव्स जो कुछ समय के बाद खुद से टूट के गिर जाती हैं। सो इट्स लाइक दैट जो हमारे बॉडीज़ में भी इसी तरीके से हमारे जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी डेथ होती है। एंड दिस इज़ ऑलवेज फिजियोलॉजिकल एंड मे बी पैथोलॉजिकल। इस चीज़ को हम बोलते हैं एपोप्टोसिस, दैट इज़ प्रोग्राम सेल डेथ। एंड हम बात करते हैं नेक्रोसिस। इट इज़ caused by like certain stimuli or trauma accidents. So we can say that this is a pathologic condition. The second difference between these two, the first we will talk about the necrosis difference, that is it is unwanted type of cell injury. It is unwanted type of cell injury. It may be caused by trauma accident and different type of acquired changes, hypoxia, ischemia, difference are there. Now the second difference between these two, apoptosis and the necrosis, apoptosis always may be physiological or may be pathological. So it is may be physiological, it may be physiological or may be due to the pathologic condition.
but necrosis is always pathological. It caused by always a pathological condition. So it is always pathological, the necrosis age. The big difference between these two, necrosis and the apoptosis, is in the apoptosis there is no any inflammatory response. So you have to remember that the difference between, a big difference between necrosis and the apoptosis, if we are talking about the mechanism context, so the main difference between these two pathways are there is no inflammatory response in the apoptotic cell. So there is a no inflammatory response, no inflammatory response. So these are the difference between these two, like what will the difference between necrosis and the apoptosis. But we will focus on this necrosis, we will focus on the apoptosis later on. So देखते हैं कि हम आगे क्या डिस्कस करेंगे नेक्रोसिस के बारे में. So first thing first, here what is the definition, a basic definition of necrosis. I'm not talking about a very big definition in the books and articles. I'm just talking a very basic definition of the necrosis. So you have to always remember about this. It is a series of morphological it is a series of morphological changes in lethally injured cell, in lethally injured cell. So what it's mean कि कोई भी चेंजेस हम देख रहे हैं, मान लो सेल के अंदर कोई लीथली इंजरी हुई है और उसमें एक सीरीज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं और इवेंचुअली उस सेल की डेथ हो रही है. सो दिस इज नोन एज नेक्रोसिस एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट mechanism we have to remember about this. There is always a morphological changes in the necrosis of about what type of cell? Lethally injured cell. It's not like that as normal cell, it's for lethally injured cell. Now we will take some type a very simple type of diagram to understand about this concept. We are talking about a very normal type of cell who is very happy, is running the cellular function and making the ATP. It may undergo some type of injurious stimuli, so there will be some type of injurious stimuli there. We are talking about injurious stimuli, and it get some stress from the external environment. So it may be changes their integrity, or maybe like there will be the morphological changes, basic thing we are talking about this. So now this cell is now weeping because there is a stress on this cell, क्योंकि क्या हुआ इस सेल पे एक तरीके का क्या हुआ है, स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है. And now it will follow some morphological changes and eventually that convert into the cell death. So we are taking this type of example to understand. Now the cell is not happy because it gets some type of stimuli which is not very good for that cell. So eventually it converted into the cell death. So why a very big concept, a very basic concept are there, why the cell undergo this type of changes. We are talking about like the causes, but a very basic concept why the cell undergo the irreversible, like reversible changes. Two things we have to remember about this. हम अगर बात करें, हम अपने घर में भी बात करें और हम अपने बेसिक लाइफ में भी अगर बात करें, तो किसी चीज़ का ख़त्म क्यों हो जाना क्यों इम्पॉर्टेंट है.
ऑब्वियसली अगर उसका कोई काम ही नहीं होगा तो फिर उसका रहने का कोई फ़ायदा तो है नहीं. इट्स लाइक दैट. सो why cell undergo this type of changes? The first thing we are talking about the cause. Why first thing, ATP is not generated by the cell. A very primary function of the cell is to generate the ATP to run the metabolic functions. So here the ATP is not generated. Due to this, the cell undergo various type of changes like necrosis, apoptosis, and eventually into the cell death. Second thing here, a very important, it doesn't run their metabolic pathway. So we are saying that doesn't run their metabolic pathway. Now we will take an example to understand this concept. A very basic thing we are taking, like glucose in the cell that converted into pyruvic acid, and then this pyruvic acid entered into the Krebs cycle. We are saying that this is a pyruvic acid, and this pyruvic acid that entered into the Krebs cycle. Now this is very important. If cell is not running their metabolic function, like the glucose is not converted into pyruvic acid, so what happened with the pyruvic acid? Now we are taking the example of severe hypoxia, ischemia, any type of thing we have take for the causes of the cell injury. If the glucose is converted into the pyruvic acid and the pyruvic acid is not converted or not run in the Krebs cycle, so what happened with this pyruvic acid? A very important thing we have to note here is that this pyruvic acid is converted into the lactic acid. And you know, lactic acid, obviously as the name suggests, it is acidic. So it is an acid. So what the acid do? A very important things here, that what acid do in our body if they accumulated in their excessive amount. So acid will do what? Denaturation of protein. It may be any type of protein. So we are just taking an example, so we can say a different type of protein. So we are just taking a common denaturation of protein. So जो acid है वो क्या करेगा? Denaturation करेगा proteins का. So there will be the protein denaturation. And this protein denaturation led down to the cell or irreversible cell injury, and this irreversible cell injury then follow the pathway of necrosis, and then we will show like a morphological changes. So it is very important to know why cell undergo necrosis pathway, why they follow this pathway eventually that causes a cell death. Now we will see what happen in the morphological changes. हमने बात की कि morphological changes होगी, कि ये morphological changes आएंगे, वो क्या क्या से morphological changes होंगे और किस तरीके से induce होंगे, उस changes को हम देखते हैं. So हम necrosis की ही बात कर रहे हैं. So हम देखते हैं कि कौन कौन से morphological changes आएंगे in the necrosis. So now the first thing will be, जैसे हमने ऊपर में ही देखा, पहला क्या होगा, जो हमारा इंट्रासेलुलर प्रोटीन का क्या होगा? डीनेचुरेशन होगा. सो इंट्रासेलुलर प्रोटीन का क्या हो रहा है? डीनेचुरेशन. It may be what type of protein? I'm just saying it may be structural or may be functional. So we are saying that it may be structural,
and it may be functional. It may be functional. It may be functional. Like what example? Like pumps, enzymes. We are taking the example of functional type of protein. So it may be pumps, different type of pumps there, and enzymes are there, etc. So there will be some pumps and enzymes. So क्या होगा? पहला चीज जो चेंजेस होंगे, इंड्यूस होंगे, क्या चेंजेस इंड्यूस होंगे? पहला होगा डीनेचुरेशन होगा इंट्रासेलुलर प्रोटीन का, और इट मे बी स्ट्रक्चरल प्रोटीन और इट मे बी फंक्शनल प्रोटीन। क्योंकि ये चीज़ के बारे में मैंने इसलिए बताया, ये जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन है, क्योंकि जब आप टाइप ऑफ नेक्रोसिस पढ़ोगे तो वहाँ पर चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन का जो डीनेचुरेशन वो अलग हो जाता है और फंक्शनल का बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जानना कि मतलब कि ये दोनों टाइप्स ऑफ प्रोटीन का डीनेचुरेशन तो होगा, लेकिन जब हम आगे जब टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग होगा, तो किस तरीके से होगा। सो इसीलिए हमने इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया है कि देयर विल बी द डीनेचुरेशन ऑफ स्ट्रक्चर प्लस फंक्शनल टाइप ऑफ प्रोटीन। सेकेंड थिंग हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल हु अंडरगो irreversible type of cell injury or morphological change. The second one will be the enzymatic digestion. Now this is very important. Enzymatic digestion. So this is enzymatic digestion. Now enzymatic digestion can be classified into two parts. This is very important to know. The first one will be autolysis. Autolysis. Now what it's mean autolysis? इसलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा, जब भी आप सेल इंजरी के बारे में पढ़ रहे हो तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप HAP जो है हमारी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सेल के बारे में पढ़ लो, कि जो उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स के क्या वर्क होते हैं। हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है सेल के बारे में, वहाँ से जाकर देख सकते हो और इस चीज़ को समझ सकते हो। देन हम आपको प्रेफर करेंगे कि इस वीडियो को आप बेटर तरीके से समझ पाओगे। सो हम बात करें कि मान लो कि हमारा ये सेल है, ओके। सो देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के अंदर, जो कि हम बात करते हैं इंट्रासेलुलर पार्ट जो अंदर का होता है। सो उसमें एक ऑर्गेनेल होता है जो आपने बहुत बार सुना होगा, डैट इज़ लाइजोसोम्स, है ना, लाइजोसोम्स, जिसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। सो what is the function of basic function of lysosome? It will secrete some type of hydrolytic enzyme. It will secrete some type of enzyme that will eventually destroy the cell, and there will be the enzymatic digestion. So because we are talking about autolysis मतलब self ही enzymatic digestion हो रहा है, तो क्योंकि वो lysosome is a part of cell, so it is induced or it is due to the autolysis because the lysosome is a part of the cell. So this is what about we are talking about the autolysis. The second thing, the enzymatic digestion is due to also to be the second type of lysis, that is heterolysis. It may be due to heterolysis. अब now this is very important. What is heterolysis? सेल का जो खुद का ही ऑर्गेनेल्स अगर उसकी क्या कर रहा है, एंजाइमेटिक डाइजेशन कर रहा, तो वो तो ऑटोलाइसिस हो गया। जब हम बोल रहे हैं कि वो हेट्रोलाइसिस हो रहा है, अगर क्या हुआ, लाइसोसोम ने क्या किया, एंजाइमेटिक डाइजेशन किया लेकिन प्रॉपरली नहीं हुआ और वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आता है, अगर वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आता है, और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर विल बी लाइक मैक्रोफेजेस विल there will be type of macrophages will be there, some type of like neutrophils, macrophages. So अगर ये जो सेल की जो एंजाइमेटिक डाइजेशन होती है, अगर न्यूट्रोफिल्स या मैक्रोफेजेस कर रहे हैं, तो इस केस में हम उसको बोलते हैं हेट्रोलाइसिस। So this is very important to know. There will be two changes induced in the cell death. The first one is the intracellular protein denaturation, and the second one is the enzymatic digestion, and it is induced by the two way, that is autolysis and the heterolysis. This is very important to know. Now we will talk about a very important things here. So what happened with the cell after these
चेंजेस, ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, इन चेंजेस से क्या क्या हमें होगा आगे सेल का? देयर विल बी डेफिनेटली द लॉस ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द सेल. व्हाट you always know that the structural unit of the cell is a plasma membrane, and if there is a denaturation of the plasma membrane, so there will be the integrity loss, and the component of that cell will come out and they will leak into the blood. So we are saying, just we are taking the example of a cell here, and it has some type of component like cytoplasm, cell organelles and fluids are there. If the changes cause loss of integrity of the plasma membrane, so we are saying that there is a loss of integrity because there is a denaturation of the structural protein. So there is a loss of integrity. इंटीग्रिटी का मतलब आपको समझ आ ही रहा है, क्योंकि उसको क्या कर रहा है, एक जगह बना के रख रहा था. जैसे ही उसका क्या हुआ, स्ट्रक्चरल यूनिट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उसका डीनेचुरेशन हो गया, वो क्या हो गया, उसकी इंटीग्रिटी खत्म हो गई और वो टूट गया, फट गया. और फट होंगे, ब्रस्ट होने की वजह से उसके अंदर के जो भी कंपोनेंट है वो सारे क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे. सो वी आर सेइंग इन दिस कंडीशन ये क्या हो जाएंगे, सारे कंपोनेंट बाहर आ जाएंगे, सारे कंपोनेंट बाहर आ जाएंगे. और ये कंपोनेंट जब बाहर आ जाएंगे, दे विल लीक इनटू द ब्लड, लीक इनटू द ब्लड. नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ दे लीक इनटू द ब्लड, देयर विल बी अ inflammatory response. So there will be inflammatory response. This can be very important because जैसे हमने ऊपर की ओर बात किया कि सेल का क्या हुआ था, यहाँ पे डीनेचुरेशन हुआ और वहाँ पे क्योंकि लाइसोसोम था. एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखेंगे, क्योंकि लाइसोसोम ने क्या किया था, अपने सारे एंजाइम्स को निकाला, वो क्या कर रहा था, ऑटोलाइसिस कर रहा था. लेकिन जैसे ही सेल की इंटीग्रिटी खत्म हो गई, वो क्या हुआ, उसके जो कंपोनेंट थे, उसने जो एंजाइम थे वो भी तो बाहर आएगा. और वो जब बाहर आएगा, क्योंकि वो एक डिस्ट्रक्टिव एंजाइम है, वो फिर क्या करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को चैलेंज करेगा, इन्फ्लामेशन को इंड्यूस करेगा. और जब इन्फ्लामेशन इंड्यूस होगा, वहाँ पे क्या होगा, बहुत ही बेसिक मैकेनिज्म, देयर विल बी द वैसोडाइलेशन. Vasodilation will be there, and this is very important. Why vasodilation? Because why? You know that blood component are of three types: WBC, RBC, and the platelets. You always know. But where the immune system present, where our like the protection agent of our body are there, definitely the question of the answer is the WBC. WBC, neutrophils, macrophages, lymphocytes. So why will there be the blood vessels will be there? There is a dilation of the blood vessels. Blood vessel का dilation क्यों होगा? क्योंकि इसलिए होगा कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, ब्लड आके वहाँ पे एक्यूमुलेट हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वहाँ पे आएंगे तो वहाँ इवेंचुअली क्या हो, वहाँ पे WBC ज़्यादा आएंगे, और ज़्यादा WBC आएंगे तो वो क्या करेंगे, उस जगह को या तो ये करेंगे, ईट करेंगे, ट्राई टू ईट द नेक्रोटिक सेल, और मे बी to repair the cell. So the result will be try to eat that cell. Sorry, there is a spelling correction. Yeah, so try to eat or repair. So this is a very basic important thing we have to know about this. Now कुछ important terms देखते हैं कि नेक्रोसिस जो होता है उसके कुछ important terms देख लेते हैं. The first here, necrosis is not going to be a very simple type of change. It take time to happen. I just take an example. We will take some type of example how the changes. लाइक जो नेक्रोसिस है, ये नहीं है कि एकदम से हो जाएगा, ये टाइम्स लेगा, 1 घंटे में नहीं हो रहा, ठीक है, वो इसको बहुत सारे घंटे लगते हैं. सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वी हैव टू नोट हियर अबाउट द नेक्रोसिस इज दैट नेक्रोसिस टेक
times to happen, and it is approximately like 4 to 12 hours. So we can write here necrosis takes time to occur or happen, time to happen. We are writing here happen. The second thing, a very important thing you have to always remember about necrosis is going to be a very type of morphological changes that happens in the living bodies. They are not happen in the dead bodies. So you have to always remember that if you are take the cell out of the dead bodies and you are saying that this is a necrosis, so this is not a necrosis, because the necrosis want like a living organism, because there is a enzymatic digestion, there is a inflammation, there is a chemical bio mediators there. So definitely जो अगर जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी हमारे बॉडीज़ है, जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अगर वहाँ नेक्रोसिस हो रहा है तो उसका लिविंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो वहाँ से केमिकल्स निकलेंगे, ऑटोलाइसिस होगा, एंजाइमेटिक डाइजेशन होगा. सो वी आर राइटिंग हेयर नेक्रोसिस always happens with living bodies, with living bodies. Now we will take an example of this. This is going to be very important. To understand this statement, we will take a certain type of example and how these changes are caused, and why we are saying that necrosis always happen with the living bodies. This is going to be a challenge for us. Now we will take an example and we will verify this statement. First, we are just taking a rough diagram of a heart, and there is a like a blood supplier there. This is just a rough diagram. Now we are just taking type, or we are just taking an example here that there is a like a severe necrosis are there, like it is a blood vessels, so there is a arterio or atherosclerosis. There is a atherosclerosis, there is a deposition of plaque are there, and due to this plaque there is a oxygen depletion, that is hypoxia, decrease in the oxygen concentration or the level, and due to this there is a decrease in the blood flow also. Now this is very important. Hypoxia and ischemia, they are correlating with each other, like hypoxia induced ischemia, and ischemia is due to the hypoxia. So this is going to be a very important, both are correlated with each other. So if there is a severe hypoxia and ischemia, so there will be a severe necrosis are there, and we are just saying that there is a necrosis is just like there is a characteristic of necrosis, there is a denaturation of the protein. This is going to be very important. So if there is a necrosis, there will be the denaturation of the protein. So no, we are just taking a very specific type of protein here, like if there will be the necrosis, so we are just taking here there will be a necrosis. We are just considered there is a necrosis, and due to the necrosis there will be the protein denaturation. So what are the type of the protein are there, like cardiac specific troponin T, we are just taking the example, and cardiac specific troponin I. What are they? They are calcium binding protein. They are calcium binding protein. So they are calcium binding protein. Now this is going to be very important. If they denature, then where are they? They are just leak into the blood, and if we take our blood and we are take for the test in the lab, so there will be the concentration of this protein, like
cardiac specific troponin T and the cardiac specific troponin I, and there will be the presence of this protein in that blood, and from the blood we can conclude that there is some type of necrosis in our heart. So we can easily, and this test we are saying this is a biomarker test. This is biomarker test. And if a person dies, now we have taken the first case here and the second case. If person dies within 1 hour, within one hour, and if you take the sample of that person of cell, if you take out the cell from that person, dead person, so there will be no necrosis will there. This is going to be very important. If the person dies within 1 hour, and we are taking just example, if the person is having a necrosis, because this necrosis will always happen with the living bodies. This is going to be very important, and you have to always point out this thing, necrosis always happening in the living body. ये नेक्रोसिस के बारे में हमने जाना कि नेक्रोसिस किस तरीके से होता है और नेक्रोसिस का क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो नेक्रोसिस हैं उनके क्या चेंजेस और होते हैं। जैसे हम बात करें न्यूक्लियस का क्या होगा, फिर उसमें क्या साइटोप्लाज्म में क्या क्या से अपीयरेंस हमें देखने को मिलेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड family, and subscribe to our channel. Thank you so much guys for watching this.